You can ask your questions. Okay. Puneet, I'm audible? Yes. ठीक है. So, Abhi, Puneet, looking at the way market has been fluctuating this year, Hmm. and जैसे कि there are few prime stocks which have been rotating on the same prices. Hmm. So what is your suggestion about investment? New investment? Yeah. See, I've been maintaining कि आप टाइम नहीं कर सकते हो. If you Hmm. think कि अभी मेरे को इन्वेस्ट करना है, I would always suggest you कि आप डेली ट्रिकल इन करो. कि अगर आपको लेट से लाख रुपए इन्वेस्ट करने और 20 दिन होते हैं महीने में ट्रेडिंग डेज, Hmm. आप उसको Hmm. वही 5,000-5,000 रुपए करके डाल, बिकॉज यू अच्छा. कांट टाइम इट. जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि अभी कर दे, अभी रुक जाती हूँ, बाद में करूंगी, बाद में शायद गिर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसे ही Hmm. आपकी पैसे से अटैचमेंट बढ़ जाती है. और जब पैसे से अटैचमेंट बढ़ती है तो वो पैसा आपको डिसअपॉइंटमेंट देता है. Right. ठीक है, आप सोचो Hmm. कि ये मार्केट गिरेगी, तो वो मार्केट नहीं गिरेगी. अगर आप सोचोगे कि ये मार्केट अभी बढ़ेगी, तो मैं अभी डाल देती हूँ, तो वो मार्केट नहीं बढ़ेगी. कंसिडर दिस. Got it. ये मान के चलो ऐसा होएगा. Agreed. या कभी Yeah, अगर यही हो ही रहा है. 1 in 100 टाइम्स लकी हो जाओगे, वो अलग बात है. बट मोस्ट ऑफ 99 out of 100 टाइम्स you will get disappointment if you try to attach yourself to money. So any fund that I have to invest over a period of month should be done on daily basis. डेली Like कि मैं बेसिस. बार में अगर डेली, 3 लाख. क्योंकि डेली डेली यू आर लुकिंग, यू आर सी, nobody nobody wants bad for this world, right? Everybody wants good things. But Hmm. Hmm. having said that, there are going to be events and situations and scams and wars and everything, right? Yes. तो उसको, Hmm. अब मैं चाहता तो नहीं हूं कि ये हो जाए, बट वो उसका फायदा कैसे उठाया Hmm. जाएगा? तभी उठाया जाएगा ना जब मैं डेली डाल रही हूँ. तो अगर लेट से कोई कोई चीज डिक्लेयर हो जाती है, कोई खराब चीज हो जाती है, तो फिर मैं उस टाइम, ये Hmm. मैं तो डेली ही डाल रही होंगी, राइट? Right. तो आई Hmm. विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. Hmm. Hmm. एंड मेरे पास ऐसा नहीं होएगा कि अरे मैंने तो यार 4 दिन पहले ही सारा पैसा डाल दिया, अब जब अपॉर्चुनिटी आई है तो मेरे पास पैसा नहीं है. कंसिडर अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे टाटा मोटर्स है, ने हाँ. उसको एक आज तक देखा है, अभी वो 950 गया हुआ है, 960 है मे बी. हम्म. तो अब नाउ आई फील यार दिस, तो मतलब 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है. मेरे को पता है टाटा विल ग्रो हम्म. ओवर अ पीरियड एज एन इन्वेस्टमेंट. हम्म. अच्छा केस, जब मुझे 950 रुपए आता है, हम्म. can go much lower also. In this case also, should I still hold and put it on daily basis only? या मुझे पता है कि ये 100 रुपए कम है और ये एक अच्छा गिरावट है इस प्राइस में, मुझे उठा लेना चाहिए. आपको किसी भी रेट पे डेली बेसिस पे उठाना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ. डिस्पाइट द फैक्ट मार्केट कितनी भी गिरी हुई है या उठी हुई है. हाँ, एग्जैक्टली. आप सी, गीतू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अ मार्केट एनालिस्ट, करेक्ट. right? यस. When you're not a market analyst, then you can't, you can only make a guess, correct? राइट. Most राइट. of the times, I'm insisting that most of the times your guess will cause you disappointment. दैट इज करेक्ट, अभी हुआ ऐसा. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ स्मार्ट शॉर्टिंग द मार्केट, यू शुड थिंक अबाउट कि मैं पैसा, सी, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम कि मेरा पोर्टफोलियो आज वैल्यू उसकी कितनी है. ओके. या. डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट. आपको ये देखना चाहिए कि भाई मैंने कितना पैसा डाला, इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है. हम्म. हम्म. ठीक है.
मैंने सपोज मैंने इन्वेस्टेड वैल्यू है सपोज 100 रुपए, तो मैं उसको हम्म 200 रुपए करने की कोशिश करूंगी, बजाय कि ये मैं देखूं कि ये 100 रुपए आज की डेट में 110 के हैं या कल की डेट में 120 के हैं। अग्रीड पुनीत, गॉट इट। ठीक है ना। मेरा या काम है कॉर्पस बढ़ाना, मेरा काम ये नहीं है कि मैं देखता रहूं स्कोर बोर्ड की तरफ वो कितना हो गया। राइट। या ठीक है ना। हम्म अब वो 100 रुपए के 50 रह जाते हैं, फिर भी आपके 100 ही खड़े रहे ना, आपने तो 100 ही डाले थे। हाँ, मैंने तो 100 डाल ठीक है। दिए। अब कल 50 रह गए, 20 रह गए, वो घूम घाम के तो ऊपर ही जाएंगे ना। ऊपर ही जाएंगे, दिस इज करेक्ट, ओवर अ पीरियड ऑफ ठीक टाइम। है। यू यस। कांट कीप हम्म एमिंग फॉर, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू, लेट से आपने 100 रुपए डाले, वो 80 रह गए। हम्म ठीक हम्म है। आप जब वहां पे खेलने की कोशिश करते हो ना कि यार मैं अभी निकाल लेती हूँ, फिर जब और गिरेगी मार्केट तो मैं डाल दूंगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, व्हेन यू ट्राई टू टाइम इट, देन यू डोंट एम फॉर बिगर गेम्स, आपको छोटे प्रॉफिट की आदत पड़ जाती है। दिस इज करेक्ट एंड हाँ, पुनीत ये इट कोई इज। बताता नहीं है, क्योंकि वो मतलब आपको हम्म आदत पड़नी गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि यू कांट टाइम इट, यू कांट एनालाइज इट, यू कांट फाइंड अपॉर्चुनिटीज, बट ये जो हम्म आदत पड़ना है कि मैं छोटा छोटा निकाल लूं, अरे 100 के 120 हो गए, जल्दी से निकाल लो, वो आदत पड़ना गलत है। आप 100 का 1000 तभी बना सकते हो जब ये बीच में आप ना खेलो। राइट। या अग्रीड। एंड बहुत ऐसे टाइम एंड अगेन ऐसा होता है कि ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अपना पोर्टफोलियो खाली कर लो, मार्केट इज गोइंग क्रैश। हाँ। एंड और कई बार बहुत गिर भी जाती है, मतलब मैं हाँ। उठी अगर 3 लाख लगाए हैं तो ऐसे कि एक रात में होगा कि ऐसे 30-40 हजार रुपए घटे हुए हैं। एंड हम्म। ऑल दो स्टार्ट कमिंग अप कि हम्म। आप एक बार फंड निकाल लो। किसने एंड देन बोला है? आई मीन पीपल अराउंड। लाइक व्हाट विल यू डू विद दोज मैसेजेस? इग्नोर देम। थैंक यू। मतलब गॉट इट। कोई फायदा नहीं है ना। हम्म आप तो ये मान के चलो कि मैंने, सी व्हाई आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू इन्वेस्ट एवरी डे, व्हाई डू हम्म सजेस्ट टू इन्वेस्ट एवरी डे इज कि आप वो पैसा भूल सकते हो जो रोज डाल रहे हो, क्योंकि वो माइक्रो अमाउंट है, राइट। यस। अब आप हम्म जब रोज डाल सकते हो और वो भूल रहे हो, और आप कह रहे हो कि यार इसका तो जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो मैं खर्च ही देती हूँ, दैट इज करेक्ट। राइट। हम्म तो इसीलिए तो वो जीरो हो सकता है ना। यस। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैंने धीरे धीरे 100 100 रुपए 100 100 रुपए करके मैंने पैसे डाल दिए, लेट से वो 10 लाख रुपए हो गए, अब वो 10 लाख जीरो होए, क्या फर्क पड़ता है फिर? वाई शुड आई एम्प्टी माई पोर्टफोलियो? लास्ट वन मोर क्वेश्चन पुनीत। एक मिनट, मैं उसके पहले कंप्लीट करता हूँ। सॉरी। यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट जब मार्केट गिरती है ना, अगर जी। आप भूल चूक से आपने उस टाइम पैसा निकाला, हाँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप दोबारा उस पैसे को डाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कह के मार्केट नहीं बढ़ने वाली। ठीक है। और जब वो बढ़ती है, जब वो भागती है, तो आपको हम्म पीछे छोड़ जाती है और आपको ऊंचे प्राइस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो ऊंचे प्राइस पे इन्वेस्ट करने का आप में जिगरा नहीं होएगा उस टाइम। अग्रीड। और ये हुआ है ऐसा, कुछ स्टॉक्स में से अगर निकाला तो दोबारा वो हाथ ही नहीं आए, दे आर गॉन। तो वो ऐसे ही होगा, और हम्म स्पेशली 2024 और 2025 में ऐसा ही होने वाला है, आप लिख लो। हम्म ओके। ठीक है। गॉट। You can, लास्ट। let's go one round and then you can श्योर। ask. Yes, Sonam, Vedant, Vandana. Hi. Hi. My question was what Gitu was saying, just also to add to it, there are so many kind of news that we come across these days. Yeah. And if a person knows that, supposing I'm in the stock market and they will
obviously share more as a well-wisher or whatever. They keep sharing more negative news with us as well. Like world is going to go through a recession, US economy, this is happening, that is happening, war and everything. Yeah, So we have to make our mindset that such ki whatever news, it does affect us. yeah. So we have to have a certain mindset that we should not let that news affect us. And in the past also, sometimes we've seen that, okay, these news have an opposite reaction also in the market. And when that news is going to come into effect, or you will never know. Hmm. So we have to keep a constant mindset and keep doing what we do. Yes. Yeah. Exactly. Anything you have to See, add to I that? I I would suggest that there are about no, if we don't count the BSE, on NSE there are about 1700 stocks. Hmm. I am only worried about my 1520. Okay. Okay, once I've selected that this company is good, I would keep investing in it like my own business. Right. I don't care about, see, when we look at a stock as a business versus looking at a stock listed on some market, on some exchange, Yeah. there is a huge mindset change. When I look it at let's say you are doing daffodils, right? Right. You can't say कि नहीं नहीं यार इस बार मार्केट मंदी है तो मैं डैफोडिल से एग्जिट कर जाऊं. Would you say that? भाई No. I would keep growing it ना. Yeah. I would go through the turbulent times, I would go through the high good times, Right. and I would keep growing my own business. Why can't we take businesses listed on the stock market like that? Why can't I, for the moment, the idea here, the trick here is to actually invest micro and think macro like a business. कि ये मेरा ही business है. If you invest in Oberoi hotels, you can't open Oberoi hotels, but it is your business because you are now a shareholder, Yeah. right? Right. So you would think good about the company कि हाँ यार they will do good, Right. right? And then keep investing. If Oberoi Hotels, for example, falls by 30%, right? As my own business, I would buy more because I'm not buying for right now. I'm not buying for 5 days. I'm not buying for 5 months. I'm probably investing for 10 years, Yeah. right? Where will the next growth come from? Maybe they open a new hotel. Maybe they add 200 more rooms. That's the faith that you need to have in it. That's the faith. Yeah, that's the conviction. How do you build that conviction is to keep listening about that company like a faithful shareholder. Ah, Why? So that is your wealth portfolio. right. Whatever you are doing in on the trading side is completely different. Correct. On the trading side, you would look at indicators, you would look at patterns, you would look at price action, you would look at volume, everything, right? Yeah. On the trading, see why we get, one of the things on why people are trader and investors, they need to have two different minds. Hmm. It's very difficult to have that. जो बिल्कुल खाली इन्वेस्टर होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं, वो भी ठीक रहते हैं. जो खाली ट्रेडर होते हैं वो भी ठीक रहते हैं, राइट? बट जो ट्रेडर और इन्वेस्टर होता है उसको दो पोर्टफोलियोज मैनेज करने हैं, दो तरह की रिस्क मैनेजमेंट करनी है, उसमें फिर थोड़ा सा गड़बड़ होती है. और डिफरेंट माइंडसेट के साथ. करेक्ट, क्योंकि यू नीड टू मेंटेन दोस, यू हैव टू स्विच बिटवीन द माइंडसेट कि अच्छा मैं अभी इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्टर की तरह सोचूं, मैं अभी ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडर की तरह सोचूं. Yeah. So from the trading perspective, या we've spoken about the wealth portfolio, and I understand that. From the trading perspective, my question is,
with so many events coming up in the year and election results also coming up, Yeah. what should I like? This is the first time. Last 5 years ago, when all this happened, I probably wasn't so experienced in the trading front, in the market and all. Yeah. So now I am more. So as a trader, what should my mindset be, or anything that I should be careful about, or I should be looking out for? See, as a trader, Sonam, eventually, you would be better off if you are trading long only. Right. It is you need to actively be in the market to trade on both sides, long and short. Right. It is difficult in these 2 years to short the market because I've been giving this view again and again that you need to have very quick fingers. And Right. you've seen that in the past Yeah. 5 months, right? Now, so try to choose long only trades. Right. Try to see that your risk reward ratio is favorable to you. If you don't think the target is more than double or triple of the risk, don't take that trade. Only take the trade when your quantity is as per your capital risk, right? Yeah. बस यही मेंटेन करना है और कुछ नहीं है. And please don't take the trade. No trade is also a trade. Yeah. Yeah, so that gambling, it's not the gambling time, because many times we think, okay, ठीक है, no problem. Sometimes I to at least do it कि कोई बात नहीं, it's coming to a level. Maybe it's not come, but I anticipatory trade. I am okay to gamble when I maintain that I am gambling. Yeah. When I tell myself that I am gambling, I am not okay to gamble that I entered the casino and then I thought that नहीं मैं इधर से पैसा बना के जाऊंगा. That is where the things change. I came to a gambling arena and then I'm thinking that I will make money is stupidity. Okay. I can gamble Yeah. intentionally. But Right? be prepared to lose it. Yeah, I'm prepared to lose. Yeah. Then I gain something, then it gives me some short-lived happiness. That's okay. Correct. Understood. वो नहीं होना चाहिए कि मैं आया तो गैम्बल करने था, Right. फिर उसके बाद मैंने उसको ट्रेड बना लिया. वो नहीं होना चाहिए. जो भी करो, माइंडसेट, हाँ, stick to that. लिख के कर लो, मतलब लिख के कर लो. tell yourself ना, somebody has to tell you, because this is a loner's journey. Right. Like you said, that you think one thing and then try to change it into the Correct. other, carry it on, and then Correct. it's confusing. So it's better to put it down somewhere if you're Correct. not that strong. In a casino, I would be happy losing, right? Yeah. But when I get disappointed losing, then I am not trading, I am not operating from the original intention. Understood. Okay. Anything else? No, I think that answers it. Thank you. Okay. Amit ji. Hi Puneet, how are you? Good. पुनीत, क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी लग रहा है कि 4 तारीख के रिजल्ट आने हैं, तो ये तो अनसर्टेन है, देखो किसने जीतना है किसने नहीं जीतना, वो तो रिजल्ट में मैटर करता है. सो डू यू थिंक कि अगर बीजेपी दोबारा से आती है तो मार्केट एकदम से एक बड़ा अपसाइड दिखाएगी? I won't tell you that view कि क्या दिखाएगी. ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, रिजल्ट भी कैसे भी आ सकते हैं, राइट? उससे आपकी ट्रेड, मैं आपको बोल दूंगा ऊपर जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तो आप डाल दोगे पैसा. मैंने अभी गीतू को भी वही जवाब दिया, मैंने कहा वो पैसे को स्टैगर करो ना. हाँ. आपको इन एनी केस स्टैगर ही करना है. चाहे नीचे जाएगी तब भी स्टैगर आपके काम फेवर में काम आएगा, ऊपर जाएगी तब भी स्टैगर आपके फेवर में आएगा. अगर आप उसको एक साथ डाल दोगे तो कहीं ऊपर आपको मार देगी, कभी नीचे मार देगी.
ओके। आप एक साथ डालोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, दोनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास अगर लेट से 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जी। आपने कहा यार मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, ठीक है, तो आपने डाल दिया कल पैसा। अब बात मार्केट कर। भाग गई, हाँ। ठीक है, मार्केट ऊपर चली गई, अब बीजेपी आ गई, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब आपको ये लगेगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट तब भी होगी, आपको यार 5, अरे यार मैं 15 ले आया, हाँ। ठीक है, मैंने 5 ही क्यों डाले, मैं और पैसा डाल देता, ये तो बहुत ही भाग गई, ठीक है। फिर वो आप क्या करोगे, वो ऊपर से टर्न मारेगी कभी, वो नीचे आएगी, तो आप कहोगे यार, यार ये तो बैठे बैठाए काम हो गया, ये तो खाली बिल पे दिखा के वापस उसने नीचे गिरा दिया, हाँ। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, लेट से हमारे हिसाब से मुताबिक से रिजल्ट नहीं आता और मार्केट नीचे गिर जाती है। बाय द वे, अगर एनडीए भी आती है उसके बाद भी नीचे गिर सकती है, अच्छा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो पत्थर पे लकीर तो है नहीं, हम्म। क्योंकि वो डिस्काउंट हो गया ना, ये एक बार 4 जून की कहानी खत्म, तो अब नया स्टोरी ढूंढेगी ना मार्केट, तो वो ये तो है तो ही। काम खत्म हो गया, इस पे तो कोई फ्लक्चुएशन होनी नहीं है, करेक्ट। तो लेट से नीचे गिर गई, फिर आप कहोगे यार ये पहले क्यों डाल दिए मैंने पैसे, हम्म। राइट। तो सब चीज बजाय कि ये सेफोलॉजिस्ट बनने के या कोई एक्सपर्ट बनने के, आप अपना जो जो थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालने में दिक्कत क्या है। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि शायद इस बात का कोई एडवांटेज मिलता हो तो वो एडवांटेज नहीं लिया। नहीं मिलता सर, 99% नहीं मिलता, 1% जिसको एडवांटेज मिलता है उसके सितारे बुलंद होते हैं और उसकी किस्मत अच्छी होती है, चलिए ठीक है। एक और बात। जिसको और या फिर आप मान के चलो कि मैंने एडवांटेज, एडवांटेज कौन लेगा, हम्म। जो अभी सोनम पूछ रही थी कि भाई मैं गैम्बल कर रही हूँ, जी। आप यहाँ तो गैम्बल करो 5-10 लाख रुपए का, हाँ। आपको यार कोई बात नहीं, ये 10 लाख रुपए जीरो होते हैं ना, कोई बात नहीं, लगा दिए हम्म। मैंने, इस घोड़े पे लगा दिए, तब समझ आता है। जी। पर अगर आप कहो कि नहीं जी मैंने लगाए, तो ये मैं जीतना ही चाहिए, नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। गॉट इट। और एक बात और पुनीत, की मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए कि मैं कोई एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किस एसआईपी को स्टार्ट। म्यूचुअल फंड में एसआईपी, म्यूचुअल फंड में या किसी भी शेयर की एसआईपी कर लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर एसआई, मैं म्यूचुअल फंड तो सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जी। यहाँ तो वो लोग आए हैं जो सीखे हुए हैं, जी। राइट, जो सीखे हुए नहीं है वो इधर नहीं आएंगे ना इस फोरम में, उनको इस फोरम का राइट। पता नहीं है। राइट। तो आपने गाड़ी चलानी सीख ली, जी। फिर आपने कहा जी मेरे को ड्राइवर रखना है, ठीक है। गॉट इट। तो बात नहीं समझ आती। तो आपको अगर एसआईपी करनी है और अपना थोड़ा रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की एसआईपी नहीं करनी चाहिए, किसी ना। पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं करनी चाहिए, हम्म। आपको या तो सेक्टर ईटीएफ की एसआईपी करनी चाहिए, जी। ताकि उसमें आपको थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए, या आपको जी। इंडेक्स ईटीएफ की एसआईपी करनी चाहिए। दूसरा क्या बोला आपने, कौन सी ईटीएफ की? इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी का ओके। ईटीएफ जो आता है, ओके। ओके। हाँ। जैसे निफ्टी बीज आता है, या जी। बैंक बीज आता है, या जो भी आता है, या फिर अगर आप लेट से गोल्ड पे एसआईपी कर रहे हो, तो गोल्ड बीज आता है, सिल्वर बीज आता है, गॉट इट। गॉट इट पुनीत। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, और बताओ जी, गीतू, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? हाँ जी, so I wanted to know, like my kids want to learn stocks and obviously मुझे नहीं आता, तो मैं उन्हें क्या सिखाऊंगी, बट कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि 15-16 साल के बच्चों के लिए हैं जो वो कर आपको सके। पता तो है यार, वो विशाल का प्रोग्राम अभी आ रहा है टीन्स का, 1 जून को, वो ना दैट्स कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब
उस टाइम पे गुणन का एक और प्रोग्राम है, उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो अगली बार कर लेना। ठीक है, डन, ओके, गॉट इट। और उस छोटे बच्चों के लिए, 10-11 साल के बच्चों के लिए भी वही प्रोग्राम होता है? सी, एक किताब आती है द स्केच बुक ऑफ विजडम बाय विशाल खंडेलवाल। विशाल खंडेलवाल, ओके। यू शुड गिव दैट बुक टू, मतलब वो बुक में इलस्ट्रेशंस हैं हम्म for kids to learn. He wrote that book for his daughter, हम्म and you should buy that book for your kids. कैन यू रीनेम इट? The Sketchbook of Wisdom. मैं डाल देता ओके। एंड फॉर पीपल लाइक अस, what is the best book to learn, ताकि हमें strategies, I mean when we listen somewhere then we forget it, so how should we, I mean is there any book that we can refer to for हमारे लिए to learn technical या fundamental? ट्रेडिंग? दो तरीके से होती है, I don't know what is better. नहीं, ट्रेडिंग के लिए, yes. ट्रेडिंग के लिए तो आई थिंक आई हैव सजेस्टेड बुक्स इन द पास्ट, बट लेट्स से आपको कैंडलस्टिक्स की बुक बाय स्टीव निसॉन पढ़नी चाहिए। जापानीज कैंडलस्टिक्स बाय स्टीव निसॉन। Steve Nisson, okay. ये हैव भी यू आप जॉइंड टिम? से अगेन? ट्रेडर इन मी आपने ज्वाइन किया था क्या? मैंने मिनी वाला किया था। अच्छा, ओके। तो स्टीव निसॉन, जापानीज कैंडलस्टिक्स। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। Okay, Sonam, any other questions? I also wanted to know where we can learn or use volumes more in trading. How to analyze volume more in trading? Like I probably use other parameters, indicators in trading more than volume. So I wanted to understand how to go deeper See, into. I would suggest you to, if you go to Vishal's channel, there are volume videos on volume. And it be different for the investment, and it will be different how I read it for trading. Trading, I don't use it that much, but maybe I don't know. I'm just thinking out loud how I should keep it separate, or same way I should No, analyze. you should probably see that from the same lens, that anything which is having, see, volume to me is a bigger daddy than price. Right. So like when we did the pasta strategy stocks, end Yeah. of the month, we would see which has the maximum volume, and then we would look at those stocks. I would always look for, even for trading, I would always look for a volume first So and then you mean price. a jump in volume, right? Like which Correct. on a day, like supposing the newspaper will give that day's volume, who's been the most gainer of the day, volumes have been for which stock. So we can use those stocks as a shortlisting method for stocks for trading. Yeah. We See, can do that. I'll show you something. Wait. How to go deeper into volume analysis also, rather than just seeing it on the chart. Yeah. So if you go here, this is NSE India. I'll just copy it in the chat. Yeah. Volume gainers processing. The volume gainers, right? Yeah. I mentioned this before in my course and everywhere. Ah. So if you go here, it will show the daily volume gainers, right? You go to top 20 volume gainers. And this is daily. Daily, every day. Okay. So top 20 gainers, losers, and then click on all securities, right? Then you will see all these stocks. Yeah. Download the CSV from here. This is manual work. Right. Right? I have made it easy for myself by having some formulas and everything, but this is manual work. So you will download here, right? Then what you're doing is making a list.
probably keep a notebook, make a list Yeah. कि कहाँ पे jump आया है. ठीक है, you can, because you can see charts, then you go to JCA HAC, तो उसका चार्ट देख लिया. तो जैसे ये जॉनसन्स कंट्रोल्स है, ठीक है. अभी आई गो टू स्क्रीनर, you can see the screener screen. Yeah, so if you put Johnson here, then इधर आपको वॉल्यूम, ये देखो बड़ा वॉल्यूम है. राइट, ये तो इजीली दिख जाएगा. चाहे आप इसको ट्रेडिंग व्यू में देखो, कहीं भी देखो. राइट, So then this can be this like is a jumbo volume with a jumbo price jump, right? Okay. And probably it's now if you see on the 5 year, it's still a big volume. And it is crossing above this high, 23 वाला high. Yeah. ठीक है, so फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया. अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन, तो जब आप the cues you are going to get from the NSE list. Yeah. If you do this every day, Yeah. you will find something. Okay. And so then basically I'm making a watch list for myself based on this volume. Correct. And then you are doing drill down with charts and everything. Charts and indicators. Okay. Like I'll tell you one of the crazy bets that I'm still looking at it. This is not a recommendation. Please don't burn your hands in it. I am a gambler. Yeah. I am going to gamble on this, okay? Ashima, very small company. It's a micro cap. Yeah. I'm repeating, I don't suggest you to do any trading in this. But I looked at this volume. Okay. And it is also, see the pattern. Yeah. So it's almost like a cup breakout. Okay. Now this is not a fundamentally good company. Right. It's not a fundamentally good. I can't see anything. But what happened was that the EPS suddenly shot up here. You see all this EPS? Yeah. And suddenly it shot up. So what is interesting to me is this EPS, from a negative EPS of 28 paisa, it went up to 98 rupees. It could have been went up to 5 rupees. So now how does this come up is that when you keep looking at those volume gainers, because price can be hidden, and this company is also trading below its intrinsic value. Right, so the intrinsic value is 25.8 and the current price is 23.9. अब मैं मतलब मेरा जो गैम्बलिंग मनी है वो इसमें 1-1.5 लाख रुपए डाल के रख दूंगा. अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चल. Right? Yeah. So you will find these opportunities when you do some spade work here. Understood. And this volume cannot be hidden. Price can be hidden. Price उतना jump नहीं मारेगी जितना volume jump मारे. And a falling stock, sometimes you find these opportunities when a falling stock suddenly rises about 20% and does an upper circuit. जैसे ये फॉलिंग तो नहीं था. चलो जॉनसन कंट्रोल्स इधर देखा था ना हमने. अब ये काफी देर से तो फॉलिंग ही है. एंड सडनली इट मेड अ 20% जंप. अभी ये ईपीएस तो नेगेटिव ही चल रहा है इसका वैसे. सो ट्रेड केयरफुली. लाइक यू नीड टू एलिमिनेट दीज कि नहीं ये मेरे मतलब का नहीं है क्योंकि इसका ईपीएस नेगेटिव है. राइट, आरओई भी नेगेटिव है. तो आई विल
go on to the next stock. अच्छा next क्या है? एजिस स्कैम. तो एजिस स्कैम देखते हैं, एजिस स्कैम में क्या हो रहा है. तो एजिस स्कैम क्या हो गया? हाँ, तो एजिस स्कैम में इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ये पी ओवर वैल्यूड लग रहा है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, ठीक है. बाकी आरओई तो ठीक है. जीपीएम 21%, नॉट इंटरेस्टिंग. वॉल्यूम ठीक ठाक है. Compared to previous volumes coming. हाँ, इट्स मोर लाइक अ ऑल टाइम हाई. Yeah. तो ये क्या करती है कंपनी? एलपीजी एनर्जी सेक्टर में है, और एनर्जी सेक्टर भी वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका मैं कंसिडर कर सकती हूँ. सो यू नीड टू सी इट लाइक दैट. You get that? Yeah, I got it. Yeah. It's helpful for stock selection also. So Correct. yeah. Correct. And then when you get an initial first impulse move, like मैंने एक स्टॉक ढूंढा और फिर उसमें पैसे डाले और वो चलना शुरू हुआ, तो आई कैन स्टार्ट पिरामिडिंग माय पोजीशंस ना. Yeah. फिर वो कन्विक्शन भी तो ऐसे ही बनेगा ना. Correct. कि मैं रोज, अच्छा 1 लाख मैंने डाल दिए, चलो अब मैं ना ऐसा करता हूँ 10-10 हजार करके और इसको स्टेप अप करूंगा. हर चढ़ते हुए दाम पे खरीदूंगा, गिरते हुए दाम पे नहीं खरीदूंगा. Right. अगर मेरे मेरे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वो गिरने लग गया तो मैं नहीं खरीदूंगा उसको. Yeah, even I've realized over the years that the conviction is most important. करेक्ट. Even in terms of sometimes I have done things like, okay, my conviction not strong, so I'll put less money. I won't do the calculation properly, but you see the results based on your convictions, I feel. करेक्ट. And always, rising stock will make you money. Anybody who can buy more on rising prices will make money. Anybody who tries to average down कि गिर गया तो ले लेता हूँ, गिर गया तो ले लेता हूँ, will not make. Agree. Have you seen that movie? What is it called? Let me show you a quick scene. It's an Amitabh Bachchan movie. Related to stock market or no? No, it is not. There is one stock which kind of one dialogue which is very apt. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए So the thing is, फेंके हुए पैसे और गिरा हुआ स्टॉक नहीं उठा. Stock has to demonstrate you कि मैं ऊपर जा रहा हूँ. Right. And when it demonstrates you, you can, rising price will give you conviction to buy it. Why do 90% traders don't make money or investors also don't make money? Because they have been taught for years and generations and ages that सस्ता माल अच्छा होता है, बार्गेन अच्छी होती है, डील अच्छी होती है, डिस्काउंट अच्छा होता है. तो किसी ने उनको सिखाया नहीं कि बढ़ती हुई चीज बढ़ती रहती है और गिरती हुई चीज गिरती रहती है. Yeah.
ठीक है. Done. Okay. Anything else? Not for me. Vandana Didi, anything for you? अभी आज के लिए नहीं कर रहा है तो हाँ, आवाज क्लियर है? आवाज ब्रेक कर रही है. हाँ, मैं थोड़ा सा लगा मुझे. ओके. और हाँ, अभी मैं सुन रही हूँ. सो गुड गुड. ठीक है. सो रैप अप करें सारे लोग. Okay. ओके. बाय बाय एवरीवन. Thank you.